If you are that person that finds it an easy way out when it comes to making drums by simply dragging a drum loop from Splice or Loopmaster onto your project, then this video is going to change the game for you. The idea is that we can simply chop each and every part of these drums onto a drum rack and play it through Midi so that we can morph all the things that we need to when it comes to muting something, applying patterns and whatnot. Even if it's a melodic track, we can always change the key, resample it in a certain way by reversing it, chopping it down, or simply playing it through a sampler. So there are many things that we can apply onto these, and I use it all the time in my track, especially when it comes to making Afrobeat, anything that is out of my zone and I cannot record any specific instrument in my studio, or if I don't even have an instrument, how I can make these samples my own. So let's check it out. So for this example, I've taken some Afrobeat loops and made some music with it. So let's listen to it. So the drum loop that I chose sounded like this. So किसी भी सैम्पल को चॉप करने के लिए वी हैव टू यूज द स्लाइस टू न्यू मिडी फंक्शन इनसाइड Ableton Live, जिसमें हमारे पास अलग टाइप के एल्गोरिथम्स दे रखे हैं जैसे वॉप मार्कर, ट्रांजिएंट, बार्स एंड बीट, डिफरेंट बीट डिविजन्स, सो दैट हम लोग सैम्पल को एकदम प्रॉपरली चॉप आउट कर सकते हैं। सो इस केस में मैंने वॉप मार्कर का यूज़ करके देखा, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट वर्क आउट क्योंकि जो भी रिजल्ट्स आए वो काफ़ी चॉपी थे, लाइक इट वॉज नॉट साउंडिंग दैट गुड टू मी। क्योंकि ये ज़्यादा थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सैम्पल, इट्स एफ्रोबीट सैम्पल, सो मैंने इसको मैनुअली चॉप करना शुरू करा एंड आई स्टार्टेड ड्रैगिंग ईच एंड एवरी चॉप्स इनसाइड माय ड्रम रैक एंड मैं केयरफुली एक ड्रम पैटर्न बनाने लग गया उसके बाद यूजिंग दीज डिफरेंट चॉप्स एट डिफरेंट टाइम। नाउ द प्रॉब्लम वाज कि कभी कभार एक किक एक स्नेयर के ऊपर अलाइन हो रही है, कभी कभार एक हाई हैट एक स्नेयर के ऊपर अलाइन हो रही है, सो आई डोंट वांट दोज काइंड ऑफ साउंड्स। सो मैं कहीं कहीं पे डिफरेंट पैटर्न्स को ढूंढने लग गया एट दी सेकंड वेरिएशंस जहाँ पर मेरे को स्नेयर और टोम्स मिलने शुरू हो गए एंड आई कुड slice each and every part that is used inside this drum rack. So let's listen to it कि किस तरह से sound कर रहा है। Almost identical, right? और identical बनाने के लिए you might have to increase the length of the sliced sample within the drum rack, थोड़ा और natural बनाने के लिए उसको। And you can even apply many grooves that we can extract from the loop itself, from the audio loop, and we can apply it onto the MIDI track in just in case कि अगर वो और सही से groove में नहीं बैठ रहा है तो। Time to hit that subscribe button now because ऐसी वीडियोस बनाने में guys काफ़ी टाइम लगता है and हम लोग को 1K तक तो पहुँचा ही सकते हो तुम लोग, so hit that subscribe button. So I wanted to make variations for the sample that I chose for this song, which is the main sample, which is this one. Yeah, such a cool sample, right? So इस sample को मैं की चेंज करना चाह रहा हूँ अब, सो आई विल चेंज द की हेयर बिकॉज आई वांट टू मेक इट साउंड डिफरेंट। क्या पता ये लूप कहीं और भी यूज़ रखा हो, तो एटलीस्ट की तो चेंज हो। इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट वी चेंज द एल्गोरिथम टू कॉम्प्लेक्स प्रो इनसाइड Ableton Live बिकॉज दिस एल्गोरिथम विल अलाउ अस टू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ आर्टिफैक्ट्स इफ वी चेंज द पिच। We'll do this for the guitars and pretty much every other melodic track that is there inside this project. If few things don't align well with the key, आप उनको फिर से स्लाइस करके एक पर्टिकुलर की में भी ट्यून कर सकते हो। मैं बेस लूप भी लेके आया था और मैंने सेम चीज़ ट्राई करी कि मैं वार्पिंग मार्कर्स बना दूँ एंड उस एल्गोरिथम का यूज़ करके जो मैंने पहले दिखाया अपने बेस नोट्स को स्लाइस कर लूँ। बट दिस टाइम आई यूज्ड अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रीसेट कॉल्ड बिल्ट इन ज़ीरो वेलोसिटी एंड विद दैट आई फाउंड रियली नाइस रिजल्ट्स। So cool, right? अब हम इस पैटर्न को डुप्लीकेट कर देते हैं पूरे अरेंजमेंट में एंड वील मेक डिफरेंट वेरिएशंस एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रैक। So let's make some changes in the pattern and make it sound like this. There's one more pattern that you can try with your melodic loop is by simply filtering it and having some sort of transition. You can even use this filtering where you want to accentuate some other elements of your track. Another thing that we can try
is basically resampling. In this case, I'm using simpler and trying to warp the sample and play it in different pitch and different speed, in reverse and whatnot. तो सिंपलर में यही आइडिया होता है कि हम भी किसी भी सैम्पल को फास्ट, स्लो, पिच डाउन, पिच अप करके फिगर आउट करेंगे कौन सा पैटर्न हम लोग को सही लग रहा है. इस केस में मेरे को ये सही लग रहा था. Now whatever I made, let's see if it works on top of our music. So after experimenting, I found more use of this sample. So different parts, you can use this kind of variations, or maybe even slice this sample into the slice mode that we have inside Simpler and make some vocal chops. How cool is that, right? I managed to make a new pattern out of the sample by playing it in different slices. So using the power of warping, slicing algorithms, or simply being clever and manually cutting down sounds to trigger it with a sampler, or extracting it from different drum loops and whatnot, this is like something that I really like to do with my music. Because there's no harm in using a sample. Actually, हम लोग samples का use करके resampling कर सकते हैं, as I told you here. And we should learn the art of resampling so that we can really, narrow down on our approach when it comes to using samples. So that we can be super creative and at the same time, crafting sounds from even overused samples. So in case there's any song that is sitting on your system which has a drum loop on it, try using this technique, try slicing it down or manually chopping it down and making some sort of loop that works for you. With that, I'll see you in the next video.